students, welcome to another class of your mathematics. Now we'll discuss about the vector. हमें already vector ऊपर करथिले, हमें बे continue करिवा. हमें different types of vectors देखथिले, right? वर्तमान हमें देखिवा addition of vectors. Normally आमे जेते बेले वेक्टर ऐड करिवा सेते बेले आमे वेक्टर रो कंपोनेंट्स जाको को ऐड करिवा, बट तार डायरेक्शन पई हमको ए प्रॉपर्टी टाइप जोटा देबी सेटा हमरो अप्लाई हो. ओके, सो देखो एबे if u and v are vector u and vector v are two vectors represented by u is equal to OA and V is equal to AB. Okay, so eta OA, eta AB. This is our U vector. This is your V. এটা এপটে যেহেতু প্যারালাল আছে এটা u এটা v. Okay, so u is equal to OA, v is equal to AB, then the vector u plus v, then the vector u plus v is represented by u plus v is equal to OA plus OB, sorry AB. OA plus AB is equal to amara OB. This one, right? OA plus OB AB is equal to OB. Right? That is the sum of two vectors represented by the diagonal by the diagonal of the parallelogram whose sides are the vector u and v. U and V. The initial point of U plus V U plus V being the same as that of U, being the same is that of u. देखो भलो भाबे देखो मु जहा लिखली जदि गोटे पैरेललोग्राम रो दीटा एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट करिवो
दीटा वेक्टर u गोटे v गोटे ताहले तारो डायगोनल टा दैट इज योर OB will represent as u plus v. Okay, clear? OB is equal to u plus v. So एटा को कहीं लिखले आउ कोन कहछि इनिशियल पॉइंट ऑफ u plus v रो इनिशियल पॉइंट एटा एंड u रो मध्य इनिशियल पॉइंट एटा तो कहछि जे same initial point of u plus v and u are same. Clear? This is your called as parallelogram law for addition. कौन है parallelogram law for addition of vectors. हैला कौन कहला इथि जदी एटा गोटे साइड वेक्टर रिप्रेजेंट करिवो एटा आ गोटे साइड वेक्टर रिप्रेजेंट करिवो ताले one of the diagonal will be represented by their sum u plus v. Okay, clear? बुझा पड़िला. अच्छा, next further से कहछि the vector u minus v, the vector u minus v is represented by other diagonal, is represented by other diagonal. Yeah, represented by other diagonal, right? So जो आरो diagonal का रहिला मन कर मो एटा नेबी, so this will be your u minus v and the direction will be this way. हैला डायरेक्शन टा एटा हमरो एटा हबो u minus v. हैला एटा u एटा v एटा u minus v गोटे डायगोनल आ गोटे डायगोनल u plus v. इज दैट क्लियर? सो मु एटा को आउरी सिस्टमैटिक वे रे कहि दोउची, एटा लिबे दोउची मु पूरा बुझिले तमन को parallelogram law for vector addition. Suppose you have suppose देखो एमती अछि दीटा वेक्टर u एटा v बा एटा a एटा b ताले एटा हबो a plus b. remember this one. suppose ए भलिया अछंती जदी तमर वेक्टर दीटा माने ऑपोजिट ए रे अछंती ताले एटा हबो a minus b एटा a एटा b. हैला क्लियर? देखो एमती ए भलिया डायरेक्शन रे अछंती ताले इट विल बी a minus b. जदी इन द कंटीन्यूअस डायरेक्शन रे अछंती सो इट विल बी a plus b. एटा हमको गुडाए जगह रे हेल्पफुल हबो, हमें भलो भाबे एटा माने रखतिबा. ओके, इज दैट क्लियर? ओके, तो वेक्टर एडिशन रो किछि प्रॉपर्टी कहिछि. वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, is commutative. That means u plus v is equal to v plus u. And vector addition is also associative. Vector addition is also associative. That means यदि तीनटा वेक्टर अछि u plus v plus w is equal to u plus v plus w. Okay. आपको नहीं करी किसी प्रॉपर्टी अच्छी एडिशन को नहीं करी हमें देखी दबा. देखो जनरल यूज हम हमरो विशेष सेमती किसी माने आरो
दबा एटा लिखि देले if alpha and beta are two scalar quantities, if alpha and beta are scalar quantities and u and v are two vectors, आकु नहीं करी किसी हमरो रिलेशन अच्छी सेटा को देखि दबा जेमति फर्स्ट रिलेशन हला अल्फा इनटू u प्लस v ताले अल्फा u प्लस अल्फा v ओके अल्फा u प्लस अल्फा v माने हमरो जो डिस्ट्रीब्यूटिव ला बंटन नियम अल्फा को u प्लस v रे गुणिले अल्फा u प्लस अल्फा v सेकंड मने करो बीटा कांस्टेंट नबा अल्फा प्लस बीटा को u रे गुणिबा ताले सेम हबो अल्फा u प्लस बीटा u ओके थर्ड ए सब जनरल आमे जानि छे अल्फा बीटा u जदी करिबा तो ताको आमे ए भलिया भी करि परिबा अल्फा इनटू बीटा u फोर्थ जदी कोनोसी कांस्टेंट आमे 1 को गुणिबा सो इट विल बी गिव अस द u वेक्टर 5 ओके जदी 0 गोटे गुणिबा सो इट विल बी गिव अस द नल वेक्टर रिमेंबर एटे खाली 0 लिखि दबा जदी हमर भूल होई जिवो तो 0 वेक्टर लिखिबा ओके राइट so these are the properties then हे गला एटा लिबे भी मु राइट लिबे दोची नेक्स्ट आसले हमरो एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर्स एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर गोटे जिनस मन रख पिले मु एबे जस्ट थ्योरी पार्ट ता तुमको कहूची whenever vector जते बेले आसीबो a vector represented by its components जेमति कि हमरो a is equal to vector कहले I plus j plus k बा 2i plus 3j minus 4k ए भले हमरो रिप्रेजेंट हबो हैला बुझी परिले तो सेहिति पई हमें वेक्टर रो जो थ्योरी टा पढुचे ताकू देखि करी हमें कंफ्यूजन हे जिबा नाही हैला जते बेले हमरो रियल प्रॉब्लम्स आसीबो सेति बेले हमें जानि परिबा ओके इज दैट क्लियर तो एजी देखो वर्तमान सेकंड आसीला वर्तमान हमरो एडिटिव इनवर्स with AB parallel PQ theta line theta हमरो AB vector is equal to मन करो U vector नबा PQ vector is equal to V नबा हैला and AB is equal to PQ AB is equal to PQ माने हमरो मैग्नीट्यूड समान then U is equal to V and U is equal to minus V vector U is equal to minus vector V if U is equal to vector AB and V is equal to QP Q ru P that means minus of PQ हैला QP that is equal to what we say one vector is the additive inverse of other
inverse of other if they have same magnitude and opposite direction. If they have same magnitude with opposite direction. ହେଲା ତମେ ए डेफिनेशन टा मन रख, इट विल बी बेटर. ହେଲା तो जेते बेले भी दीटा वेक्टर सेम डायरेक्शन थिबे ऑपोजिट सॉरी सेम मैग्नीट्यूड रे थिबे ऑपोजिट डायरेक्शन हबो ताहाले आज हमरो गोटे आ गोटे रो ऑपोजिट हबो. सो इटी माइनस v कहले माइनस वेक्टर v इज इक्वल टू -1 वेक्टर v रे. ହେଲା तो एठी जो मु लिखली u v u टा v v टा q. ହେଲା तो जेते बेले भी गोटे वेक्टर आ गोटे रो जदी इनवर्स हबो ताले गोटे आरोटार माइनस हे जिवो. ओके क्लियर बुझा पड़िला. इनवर्स ऑफ ए वेक्टर मन करो गोटे वेक्टर मन करो एमती अछि रे मु तुमको ए भलिया दे दोछि. इट विल बी बेटर ए बी सपोज अछि 2i 3j plus 4k रे. तो बी ए कहले दैट इज माइनस ऑफ ए बी केते हो जे -2i plus 3j plus 4k सॉरी -4k ए रकमर हबरे बुझी परिले. ओके सो हियर इज योर हमर एठी वेक्टर रो इनवर्स एडिटिव इनवर्स माने दीटा जाक मिसेला बेल को हमर नल वेक्टर आसियार अछि बा जीरो वेक्टर आसियार अछि. ओके क्लियर. अच्छा नेक्स्ट व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग हमर एबे जोटा देखिबा पोजीशन वेक्टर. एटा हमको सबु बेले दरकार पड़िबो. हमें जेते बेले भी वेक्टर प्रॉब्लम करिवा सेति बेले हमको एटा दरकार पड़िबो. ओके पोजीशन वेक्टर आपको हमें शॉर्टकट रे पीवी बोली मध्ये कहबा पे. Let O be a fixed point. O be a fixed point. Normally ए जो O टा नबा में O टा हमरो origin ए टाइप रो नै जिबा. ओके O is a fixed point. Then the vector OP. Then अच्छा मु चित्र टा कर दू OP. ହେଲା OP then the vector OP is called the position vector of point P is called the position vector of point P relative to O. This is important. Relative to O. Okay, and is denoted by P is equal to OP. P is equal to OP. ହେଲା देखो एटा स्मॉल p रे एटा स्मॉल p एटा हमरो नाटा कैपिटल OP. ହେଲା एटा को हमें पोजीशन वेक्टर बोली करी कहि परिबा. ओके तो जदी हमें आउरी किछि ना नबा सपोज एटा ने भी मु r तो एटा पोजीशन वेक्टर OR is equal to r मु एटा ने भी मन करो q तो
तो OQ is equal to हमरो small letter q. So like this, whenever you want to find a position vector of a point, तो हमें origin को नेकरी बा o को ने compare करिकरी एठी o को ने आइछि हमें जे कोनोसी point नेकरी हमें compare करिकरी बाहर करि परिबा. Okay, so it is similarly position vector of point q. Similarly, position vector of point q is equal to q position vector of point r is equal to r. Okay, so एठी गोटे जिंस ध्यान दियो हमें जे कोनोसी पॉइंट रो पोजीशन वेक्टर हमें काढी परिबा. सपोज देखो बिले एठी मन करो एटा OP एटा OQ एटा OP एटा हमरो OQ. देखो अबे लेट OP the position vector of P is equal to P implies OP is equal to P. Position vector of Q is equal to Q implies OQ is equal to Q. Now what I will do here, ମୁଁ ଏବେ कोन करबी PQ को जॉइन करूची मु. ओके कोन करची हैला PQ. अच्छा वेक्टर PQ is equal to हमरो एबे नियम अनुसार कोन फॉर्मूलाटा OP plus OQ OP plus OP एटा एपटे डायरेक्शन अछि PQ एटा एपटे डायरेक्शन अछि OP plus PQ is equal to कोन OQ हिला. So PQ is equal to OQ minus OP. OQ कहले केते नै छिमु Q P. Therefore position vector of PQ एटा हमें कंक्लूजन कोन पडिला PQ vector is equal to position vector of P आगो Q अछि position vector of Q minus position vector of P. हैला मने रखो एटा जिते बेले भी हमें पोजीशन वेक्टर PQ वेक्टर बाहर करथुवा Q minus P हबो. मन करो AB बाहर करबी B minus पोजीशन वेक्टर ऑफ B minus पोजीशन वेक्टर ऑफ A हबो. मु जेते बेले BA बाहर करबी पोजीशन वेक्टर ऑफ A minus पोजीशन वेक्टर ऑफ B हबो. हैला एटा हमको बेसी दरकार पड़िबो हमको माने एटा मने रखिया को पड़िबो. ओके क्लियर लिखि दियो. एज आई टोल्ड यू मु तुमको प्रीवियस क्लास रे भी कहितली एबे भी कहूची जे फैक्टर पाठटा हमरो हमको अराउंड 14 टू 15 मार्क्स हमको दबो. 15 मार्क्स कंफर्म 15 मार्क्स. जदी आउरी तीनटा 4 मार्किया पड़ी जीवो ताले 19 मार्क हे जीवो हमरो. बुझि पाले कि जदी 3 मार्क्स 4 मार्क्स रो तीनटा आउ 6 मार्क रो गोटे 1 मार्क रो गोटे 6 मार्क रो गोटे 1 मार्क रो गोटे 4 मार्क रो दीटा कंफर्म हमरो आसीबो. हैला ता सहित एडिशनल जदी आ गोटे 4 मार्क्स रो पडिला जोटा नॉर्मली पड़े ताले हमरो कोन हे जीवो केते मार्क हे जीवो 19 मार्क. बुझिला सेति पई ए चैप्टर टाकू हमें भलो भाबे करिबा सो दैट हमको एडवांटेज रहबो. आ गोटे जिंस ए वर्ष गोटे चैप्टर टा एक्सरसाइज 12D टा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट टा हमरो स्किप कर देछि छाड़ देछि. तो 12A 12B 12C ए तीनटा चैप्टर रु हमरो
एतिकी मार्क आसीबो 12A टा टिके हमरो बेसी थियोरी अछि 12B 12C टा बहुत इजी अछि 12B टा डॉट प्रोडक्ट 12C टा क्रॉस प्रोडक्ट बड़ सहज अछि आमे करि परिबा एतिक जदि करदबा हमको 3D आर ऑप्शन रे और रे 3D आसीबो 3D टा हमको माने भल माने तार ऑप्शन रे रखले भी हबो जेमती हमरो भोजी भोजी फंक्शन हेले आमे करेंट रे तो सब काम करू किंतु स्टैंड बाय जनरेटर रखू बा घरे भी जेमती स्टैंड बाय इन्वर्टर रहे इन्वर्टर भी काम अच्छी करेंट गले काम दब तो 3D टा हमें इन्वर्टर बा स्टैंड बाय रखिबा किछि पिला 3D करंती वेक्टर टाकू इन्वर्टर जनरेटर रखंती हैला तो सेहिति पई हमें जदी फर्स्ट टॉपिक टा भलो भाबे कंप्लीट कर दबा वेक्टर टा हमको ग्रेट एडवांटेज रहइबो ओके अच्छा एबे आरो आउ गोटे हमर रहला एटा हे गला pq q p जदी हमरो एची मिडिल पॉइंट माने ये कहिथिबो रेशियो जदी बाहर करथिबो ताहले हमें कोन करबा ओके देखो एठी सपोज यू हैव मु भाबुची तमाने देखुथबो एबे जेहेतु ऑलरेडी तमरो एग्जाम डेट डिक्लेयर हे सारलानी तो एबे हमें एटा देखुथबा ओके निश्चित भाबे राइट सो इफ देखो हमर जदी एठी मोटा शॉर्टकट रे देई दोची एटा ओ एटा p एटा q now here is your r एटा p एटा q एटा r तो जदी हमरो रेशियो टा देइची if the ratio given r is the position vector of point r then r is given by this one if the ratio pr by rq is equal to m by n केले एटा हमरो m एटा n op position vector op is equal to p oq is equal to q and or is equal to r हेले r रो पोजीशन वेक्टर जदी बाहर करिबा ताहले हमें केमति बाहर करिया द पोजीशन वेक्टर ऑफ r that is equal to vector r is equal to m into q and into p by m plus n m into q position vector of oq n into position vector of p op हैला हमें ए पोजीशन वेक्टर देखो नॉर्मली एठी ऊपर लिखिबा सो दैट हमको कंफ्यूजन होबनी हैला जदी एटा इंटरनल डिवीजन अछि माने pq मझिरे जदी r अछि तले mq plus np divided by m plus n होबो जदी एक्सटर्नल पॉइंट अछि बाहर अछि r टा ताले माइनस होबो जो हमरो डिवीजन फार्मूला मन पका mq minus np divided by m minus n हैला जदी r का if r that is equal to vector r position vector of r is the midpoint of pq is the midpoint of pq then m is equal to n is equal therefore vector r is equal to p plus q divided by 2 okay vector r is equal to p plus q divided by 2 okay जेते बेले भी हमको वेक्टर देथिबो तार मिड पॉइंट कहिथिबो बा पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ताले दीटा देखो ऐड कर दो बाय 2 केमती ऐड करबा कोन ऐड करबा सेटा हमें एबे जेते बेले नेक्स्ट ये को जिबा सेते बेले देखिबा
ओके एगला एटा थ्योरी पार्टा हमको 1 मार्क पई हेल्पफुल हबो बुझि पाले कि 1 मार्क टा हमरो भलो काम देबो बाकी बेले बेले हमर जो क्वेश्चन जाको करबा एथरो ही हमें करि परिबा ओके तो एबे देखो को करिया बे resolution of a vector into components resolution of a vector into components एबे पर्यंत आमे वेक्टर र थ्योरी का पढुथले हिला ए पर्यंत आमे केमती ताकू करिबा तारो कोण लिखा जाए वेक्टर जानि जे आमे +2 फर्स्ट ईयर रे फिजिक्स रे आमे पढि जे किंतु एबे पर्यंत आमे मैथमेटिकली मु तुमको वेक्टर टा केमती लिखा मु जस्ट गोटे एग्जांपल तुमको देई देथिली बट जनरली मु तुमको कहि नथिली एबे आमे एटा देखिबा जो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स ओके सो consider the xy plane एटा 4 2D रे पिले लेट I cap एटा ध्यान से देखो लेट I cap and J cap be the unit vector along OX and Y be the unit vector along OX and OY. Suppose this is your OX, this is your OY. So I cap is the unit vector along this one, and J cap is the unit vector along this side. Okay, so then we will have a vector u is equal to OP the Q volume. Then we will have suppose a point P रो मन कर कोऑर्डिनेट टा xy हैला ताले जल्दी एटे गोटे वेक्टर आकु पैरेलल हेकरी अछि u हैला तो हमें u इज इक्वल टू xi plus yj with magnitude of u is equal to root over x square plus y square एटा को कोन बोली पड़िबा magnitude of vector u is equal to u रो मॉडुलस हैला x square plus y square हैला बुझी पारिले जति एटा हमरो 3D हबो in case of this is equal to your 3D जति एटा हमरो 3D हला for 3D I is the unit vector along x-axis, J is the unit vector along y-axis, and K is the unit vector along z-axis. And u is equal to जदि xi yj zk रहिला एमती कैप नियाती भाबे दबा ताले मैग्नीट्यूड ऑफ u is equal to
root over of x square plus y square plus z square. It x square plus y square is 2d re. 3d re you will have x square plus y square plus z square. है ओके बुझा पड़ा तुम मान को एठी दी तीनटा जिनस मन रख वेक्टर नॉर्मली रिप्रेजेंटेड एज I j k some I plus some j plus some k I j k तीनटा जाक यूनिट वेक्टर है मुझे लिखई दूची I j k all three are unit vectors. There are 2-3 things you should remember. I cap unit vector. Therefore, I cap ro magnitude is equal to I j k. Are unit vectors. I ro magnitude, j ro magnitude, k ro magnitude is equal to 1. You should remember this one. सबु बेले vector can be represented in a scalar component or in a vector component. आमे मन करो u vector को लेखिबा 2i 3j 4k एमती लिखि परिया ताकू scalar component रे 2 3 4 भी आमे लिखि परिया जदी ए भलिया अछि ताकू ए भलिया लिखि परिया ए भलिया अछि ताकू ए भलिया लिखि परिया हैला बेले बेले पॉइंट देथिबो पॉइंट जदी देथिबो ताले एमती देथिबो 1 2 -1 दिस इज नॉट योर वेक्टर हैला एटा पॉइंट बट एठी तोर वेक्टर ता इन द स्केलर कंपोनेंट फॉर्म रे माने विदाउट ijk एठी वेक्टर ता विथ ijk हैला माने करो r रो मैग्नीट्यूड बाहर करबा u रो तो केते हबो 2 रो स्क्वायर 3 रो स्क्वायर 4 रो स्क्वायर 4 9 16 which is equal to root over of 29 हैला एटा एमती भी हमें बाहर कर दी परिबा आ गोटे जिंस दउची जोटा कि हमर 3D रे आसीबो रिमेंबर दिस वन डायरेक्शन कोसाइन और सिंपली बेले बेले खाली कहथिबो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर तो जदी u is the vector with xi yj zk ताले dcs माने डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ u is equal to x divided by root over of x square y square z square एटा हमें डिटेल टा 3D रे पढिबा ओके y divided by root over of x square y square z square and z divided by root over of x square y square z square हैला बुझा पडिला तमान को आकु धरि करी हमें प्रॉब्लम्स करिबा जेते बेले हमरो माने थ्योरी सरला ऑलमोस्ट हमें नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स प्रॉब्लम करिवा हमें भी चाहिबा जदी प्रॉब्लम किछि करि परिबा राइट तो प्रॉब्लम कला बेले थ्योरी जाक मन रखिबा देयर आर सर्टेन थिंग्स हमको एप्लीकेशन हबो आउ किछि हमरो निजर बुद्धि प्रयोग करिकरी करिया को पड़िबो सबु बेले गोटे जिंस मन रख मैथमेटिक्स रे यू नीड लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस एंड नॉलेज खाली हमें फार्मूला घोषि दबा आउ थ्योरी टा पानी कर दबा ताहले प्रॉब्लम हे जिवो एटा नुआ हमको किछि ना किछि कॉमन सेंस यूज करिया पड़िबो आउ से कॉमन सेंस टा जारो भलो तारो भलो मार्क आसे हमें फार्मूला पूरा बाय हार्ट कर दबा आउ पूरा एकदम पानी कर दबा जो थ्योरी सार देले ता सहित हमको लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस यूज करिया पड़ियो जारो जे भलो कॉमन सेंस यूज करिवो तारो भलो मार्क आसीबो ओके रखिबा एतिकी
बाकी नेक्स्ट क्लास रे प्रॉब्लम्स करिबा. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.